हेलो। हेलो। Hello, how are you, my friend? Let's talk about that. Hello, how are you, my friend? Let's talk about that. Hello, how are you, my friend? Let's talk about that. Let's talk about that. About that. Let's talk about that. अभी कैसा आ रहा है? Final. Let's talk about that. Let's talk about that. Let's talk about that. अभी कैसा आ रहा है? सही हो गया। चलो तो फिर अब शुरू करते हैं। सॉरी फॉर द डिले इफ़ यू गाइस फेस्ड इट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो अब से लाइव स्ट्रीम में डेली करने की कोशिश करूँगा। दिस इज़ नॉट समथिंग अबाउट गेमिंग। जो मेरा प्लान है इसको लेके वो ये है कि मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा। मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा जो करनी चाहिए। जो जो मेरा प्लान है इज़ टू डिस्कस थिंग्स दैट आई एम इंटरेस्टेड इन एंड फाइंड पीपल मोर लाइक मी। हाँ, तो अब से लाइव स्ट्रीम में डेली करने की कोशिश करूँगा। दिस इज़ नॉट समथिंग अबाउट गेमिंग। जो मेरा प्लान है इस एंड रोज़ लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करूँगा। टैग एआई एंड और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। विल फाइंड मोर पीपल लाइक मी। मेरा दूसरा चैनल भी है जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं। आज ट्विटर स्क्रॉल करेंगे। मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ, करंटली सुपर इंटेलिजेंस पढ़ रहा हूँ, उसमें से जो चीज़ें होंगी मुझे स्पेशल लगेंगी, डिफरेंट लगेंगी, मैं वो हाईलाइट करूँगा। एंड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो अपन वो भी डिस्कस करेंगे। सो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का खोलते हैं सबसे पहले ट्विटर फीड। हाँ, गेम्स भी खेलेंगे, पर गेम्स अभी तो मेरे पास पीसी कम पावर का है, तो गेम्स अपन इतने अच्छे नहीं खेल सकते। अपन प्लेबल्स ट्राई करेंगे। इसमें काफ़ी सही गेम्स मिले मुझे टाइम पास के लिए। अगर कुछ नहीं मिल रहा करने को तो गेम तो खेल ही सकते हैं, उसके कौन से पैसे लगेंगे। हिंदी में होगी लाइव स्ट्रीम,
बाकी आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एज आई विल प्रोसीड. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट. सबसे पहले ही मिस्टर एम के PhD आ गए हैं, तो उन्होंने आज अपना पैनल्स ऐप बंद कर दिया है. वही वॉलपेपर वाला ऐप जिसे किसी ने यूज़ नहीं किया था, एंड क्योंकि किसी ने यूज़ नहीं किया और उसके सर्वर कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी उनके जो प्रॉफिट था, सो आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन टू टर्न इट डाउन. आई मीन ऑफ कोर्स ही हैड सम विजन. एक सब्सक्रिप्शन क्यों है इसके पास? किसका है ये सब्सक्रिप्शन? ओह, I mean, of course, he had a vision and about that app which he couldn't fulfill. प्राइम रीज़न ये भी है कि AI वीडियो और ऑडियो जनरेशन आ गया है अब, तो क्यों ही ज़रूरत है उसकी. लोग खुद अपने हिसाब से डिज़ाइन जनरेट कर रहे हैं. आर्टिस्टिक वैल्यू थोड़ी कम हो गई है. हो सकता है कि उस पर कोई AI मॉडल ही ट्रेन कर दे अपना बिजनेस आइडिया. टेक ऑल काइंड ऑफ वॉलपेपर्स फ्रॉम एन ऐप एंड उस पर आप अपना AI मॉडल ट्रेन करो एंड देन जनरेट ऐप जो विद मिनिमल टेक्स्ट एक बहुत ही बढ़िया वॉलपेपर जनरेट करता है. एंड नैनो बनाना प्रो कैन डू दैट यूजिंग API, आई गेस. काफ़ी अच्छा है. उस पर AI मॉडल्स ट्रेन करके वॉलपेपर पे काम हो सकता है. बिट्रेट कम करने का मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है, तो वही था कि उन्होंने पैनल्स बंद कर दिया है, उसके बारे में अपडेट दिया था. खुल गया होगा ना इसमें. यूट्यूब ने भी कुछ अनाउंस किया है. Annual free reminder of YouTube. YouTube video. I want to see what channels I watch the most. How many YouTube shorts I scrolled over the strategic new branded rewind. Well, rewind is dead guys, but अच्छा फीचर है Spotify Wrapped की जैसे. यहाँ पे Spotify पे भी तो आता है, Apple Music भी देता है शायद उस पर, कि कौन कौन से पन्ने वो किया है स्क्रॉल. लेट्स स्टार्ट. रेडिट भी स्क्रॉल करेंगे, अगर आपके पास हो कुछ शेयर करना तो वो भी स्क्रॉल करेंगे. आई एम ऑल ओपन अबाउट चेकिंग आउट एवरीथिंग दैट आई कैन. सो वेल, द लेजेंडरी गाइज निखिल कामत ने भी इलॉन मस्क के साथ पॉडकास्ट किया, वो भी देखी मैंने आज. What do I think about it? Well, I was surprised that how Elon thinks that there is a higher chance that we are in a simulation. I mean, of course, it's surprising. He thinks that at a high chance that एक्चुअली पहले भी डाला है ना टीज़र इस चीज़ का इन्होंने शायद, क्योंकि सेम फ्रेम पिछली बार भी मैंने एक लाइव स्ट्रीम की थी. डेजा वो हो रहा है, नॉस्टैल्जिया पहले भी करा हुआ है मैंने. About the simulation theory that currently we are in simulation, and he thinks that there is a higher chance that turns out it's true, and there could be multiple layers of that simulation. I don't know what's true. Maybe what we think about God is the guy who is playing just as video games, or maybe that's why astrology works or doesn't work. I don't know, but that thing shook me actually. I felt bad, different. I don't know how do I describe that. Other thing, he told that in next 20 years में universal basic income नहीं universally high income आएगी, and you can have anything that you can think of. फिर भी वो कोरोना के जैसे हो जाएगा, लोग बाग घर में बैठे बैठे बस टाइम पास करेंगे.
एंड वन मोर थिंग फोकस्ड ऑन वाज वर्किंग इज़ ऑप्शनल। काफ़ी बुक्स भी सजेस्ट की लोन मस्क ने, जो कि मैंने ऐड कर लिया लिस्ट में गुड रीड्स की में। पढ़ेंगे वो भी जैसे जैसे अपन प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी सुपर इंटेलिजेंस पढ़ रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। And yes, I'm a big fan of anyone who wants to build, anyone who aims to make more than they can take has my respect. And that's really the core principle. Strive to be a net contributor in society. Of course, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गेन्स कम कर दो। थिंक एट अ बिगर स्केल। लाइक ये नहीं कि आप 2,000 रुपये दो और 1,000 रुपये का गेन करो। You can think at a much bigger scale that you give 2,000 crores and your gain is only 100 crores. At that scale, the thing becomes more meaningful, as that's what I think. Otherwise तो ये भी है कि कंट्रीब्यूटर तो दुकानदार भी है। आई मीन यार देखा जाए तो वो भी सही बात है। ही इज़ एट अ लेवल स्मॉलर स्केल, बट इन द एंड ही इज़ अ कंट्रीब्यूटर। स्केल का नहीं मतलब, पर of course you should, he is not wrong. It is similar to Pursuit of Happiness. Pursuit of Happiness पिक्चर देखी है क्या आप लोगों ने? कम कर देता हूँ बिट रेट, ये बार बार पूरा जा रहा है मुझे। बिट रेट में देखता हूँ होता क्या है। इट हैज़ बिन रिड्यूस 7,000 3,000। अब तो सही होना चाहिए। बिटकॉइन इज इन द गाय। ये रोबोट कियोसाकी की आप लोगों ने बुक पढ़ी है? पुअर डैड रिच डैड मेरे पास है, पढ़ी थी मैंने थोड़ी बहुत, पर और पढ़ेंगे। I can actually make this about that. Speed for tech is what I want to become. ठीक है, ठीक है। Of course I am behaving weird and other things, but कोई देख भी तो नहीं रहा, क्या ही मतलब है, मैं अकेला ही आपस में लग रहा हूँ। पर आई थिंक मैं रोज़ करूँगा ना, महीने भर में थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। अभी जैसे मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं कैमरे से बातें कर रहा हूँ खाली, एंड आई बिलीव कि वर्ड्स भी क्लियर नहीं है। थोड़ा सेल्फ थोड़ा अच्छा ही रहेगा मेरे लिए अगर मैं रोज स्ट्रीम करूँगा तो। आई होप आप लोगों को कुछ और नहीं आ रहा हूँ मेरी आवाज़ के अलावा। भाई माउस की आएगी उसकी, सॉरी आई कैन नॉट अफोर्ड। ओ आई कैन अफोर्ड, वो भी नहीं आएगी। ट्रैक पैड यूज़ ले लूँगा मैं। डीप सीक 3 आ गया जिसका LM अरेना में चेक करते हैं। ऐसे बोल रहे हूँ जेमिनी 3 के ऑन पार परफॉर्मेंस एंड अगेन सोटा स्टेट ऑफ द आर्ट है वो कई चीज़ों में ऐसे ही, बट जेमिनी 3 के आसपास बोला जा रहा है। आया क्या यहाँ पे? नहीं आया अभी, अभी LM अरेना में नहीं आया। आ तो गया पर इसकी वो क्यों नहीं है? एक्सपेरिमेंटल है इसलिए होना चाहिए। विस्पर मॉडल्स भी आ गए हैं। विस्पर का भी ऑडियो इमेज वाला मॉडल था कोई, दैट इज ऑल्सो अगेन नाउ स्टेट ऑफ द आर्ट। ओह सॉरी मुझे ध्यान नहीं था, विस्पर ओपन AI का ही ओपन सोर्स है फॉर स्पीच रिकॉग्निशन एंड, ये लिखा हुआ ना, फॉर स्पीच रिकॉग्निशन एंड ट्रांसक्रिप्शन क्रिएटेड बाय मशीन लर्निंग मॉडल। अभी डीप सीक का चेक करेंगे, आप लोग मुझे याद दिला देना।
Of course, the whale is back, chubby. This month, what I think Google will release is Gemini 3 Flash. Veo 3 के तो भी कोई लीक्स भी नहीं है, स्पेकुलेशन भी नहीं मिली मुझे, तो आई डोंट नो. एंड कल चैट जीपीटी को 3 इयर्स हो गए थे, अराउंड 1000 डेज. विजय शेखर शर्मा ने काफ़ी अच्छी पोस्ट करी थी उसके बारे में भी. 3 साल में 3 years ago when everything changed. 3 साल पहले he took the risk and launched ChatGPT and just changed everything. गूगल ने रिसर्च कर रखी थी, मॉडल्स थे, TPUs थे, सब कुछ था, बट दे डिडंट वांटेड टू टेक रिस्क एंड रिलीज AI मॉडल क्योंकि बड़ी कंपनी है. बट OpenAI, they released it, took the risk, changed the trajectory of human civilization is what I believe they did with that. ChatGPT आया, फिर उसके बाद तो मेन मास मार्केटिंग हुई, सब मॉडल्स रिलीज कर दिए. मैंने पहली बार यूज़ किया था 2022 में आया था ना, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग ऑफ द 23, तो आई यूज इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 में यूज़ किया था मैंने. एंड देन आई गोट मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन इट, और फाइनली फिर इस साल मैंने अपनी फील्ड ही चेंज कर ली. नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक AI फॉर हेल्थ केयर. होपफुली अगले 10 साल 15 साल में मैं कर लूँगा बिफोर सिंगुलरिटी. एक टॉपिक पे रहना चाहिए ना, सही रहेगा. And robots be currently after ChatGPT things just accelerated. I mean, it's even breaking up Moore's law, which says about 2 years the AI capabilities are doubling almost 7 once, and nothing is slowing down. Also, Elon Musk also talked about productivity in case of AI, and he says that Google will be one of the biggest companies in the world. No one can beat them. They have a better infrastructure, hardware, software, research backed, and everything. And the thing is that we haven't realized productivity enough till now to make some impact in real world. The AI is definitely productive, and but it will start to show off after some time. So जो लोग बोल रहे हैं कि everyone is just wasting money for AI, it's not productive, it doesn't give any gains, well, they are false. It's just a waiting time. When things cross a threshold, suddenly everything will be productive, just like when ChatGPT launched. Now suddenly everything is about AI. एंड इवन द कंट्रोवर्सी में है क्योंकि इसने 1 घंटे बाद ही ये रिलीज़ कर दिया. यही है, आई थिंक यही है ना, यही है. उसके पॉडकास्ट रिलीज होने के 1 घंटे बाद ही वो कर दिया रिलीज़, उसको AI से समराइज करके. बट इन द एंड ही अचीव्ड हिज गोल. ही इज़ गेनिंग व्यूज़, मे बी ड्यू टू सम अदर रीज़न. व्यूज़ तो आ रहे हैं, पर मैं भी करूँ ये, मुझे उस पर कैसे मिलेगा? There's no way except to use my phone for this. बीच बीच में यूट्यूब के भी आएंगे. आई एम ट्राइंग टू बी बिग ऑन यूट्यूब, not $1 Satoshi. I don't know who this guy is, but he is definitely very rich. GTA 6 आ गया गाइस, प्री ऑर्डर के लिए. खरीद रहे हो आप? आई विल बाय. पैसे नहीं है, एंड पीसी भी इतना पावरफुल नहीं है. अभी 720p पे स्ट्रीम करनी पड़ रही है, तो फिर कैसे पार पड़ेगी? खरीद भी लूँगा तो भी. Elon Musk also talked about X.com, the vision he had from the year 90s. They laughed at it, but thing is that it's just a weird obsession. Well started जब उनके पास 3 डोमेन्स थे, उन्होंने बताए थे, चैट, आई थिंक G and X.
तो X तो and all these domains were owned by him or someone else, but after some time he got an opportunity to buy the x.com domain और फिर उन्होंने उसको रखा and it became a thing. And SpaceX is not due to X. The SpaceX full form was Space Exploration Program, which got shortened to SpaceX because of X in exploration. And he gave an analogy of FedEx, like how they have X with EX, and he just made that X. And talking about the X.com company, he wanted it, his vision was that it would be a finance platform where everything can be found about everyone else, from politics to money, which I think he is trending currently, that formal Twitter into the X.com and all in one app, from X chat to everything else. And ऐसे उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी X रखा, just because it was his wife's idea. It was not his idea to name his kid X. So all of it's just a coincidence. जूते भी पहन रखे थे इलोन मस्क ने, उस पर भी X लिखा हुआ था, and I like them very much. Actually clothing ही मुझे अच्छी लगी, full black, no problem. ChatGPT ने एड्स दिखाने शुरू कर दिया. I mean, of course they have to go profitable, otherwise they will not be close to AGI. How will they bring AGI without money? Again, AI generated a it's not AI generated, it's something else which I think we should not discuss. Boring. Grok Imagine 1.0 is coming. Elon Musk also talked about the currency, how money will evolve in the future when everyone would have high income. Like, of course, लोग आपस में compete करते हैं पैसे कमाने के लिए. He joked about having $1 trillion at an island, and they would be of no use because there is no other person to whom he can give that money and make him work. So in future the real currency will be energy, and he thinks that Bitcoin is going to stay relevant because it depends on energy that is consumed by GPUs. Energy will be the only currency that matters, and that everyone will be limited. You can have unlimited food and currency, money, items, everything else, but energy is one thing that they will be restricted by. He talked about Kardashev scale, and we are at currently 0.73 of the level 1. Once we reach there, things will proceed up to level 2. He has plans to launch satellites in the space force with He has plans to launch satellite in space with solar panels to increase more energy capacities. Overall, energy is a big thing everyone should invest. I don't know, it's not a financial advice, but I think energy is what we will be limited by in the end. All of it will come down to energy. इंडिया में भी बकचोदी करती है सरकार बहुत ही ज़्यादा. क्या ही ज़रूरत थी उसकी. वो और 6 घंटे में लॉगिन करूँगा कि मैं व्हाट्सएप पे यार. Gemini has memory. और कल मैंने लोगों का ट्वीट भी देखा था. Of course the same guy from AI Studio. They are actively trying to make changes to the landing page of Gemini. तो एक बार वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ChatGPT का जो ऐप इंटरफेस है ना मोबाइल का, वो काफ़ी बढ़िया है. मतलब no one comes close to that. Gemini is far behind, and personally I don't prefer to use Gemini app other than
generating images using Nano Banana Pro, cause that's not free on AI Studio. For everything else, I prefer AI Studio. For other things and for deep research also, I have to use Gemini because they are not available on AI Studio. Other than that, for everything else, I either use Perplexity with other Perplexity with Claude Sonnet and ChatGPT or AI Studio. That's it. Actually, Claude is much better for assisting me in writing scripts. It performs pattern recognition very good. दूसरा अकाउंट बनाऊंगा मैं PlayStation partner Expo. Nice. Varun Maya is now going for gaming. आप लोगों ने भी देखा होगा गेम काफ़ी अच्छा है and he has been accepted for that. मैं तो नहीं खेल पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतना पावरफुल पीसी नहीं है, but I hope we will see some good game that I can play in future. Check out my next video where I talk about how Visa and other hidden AIs work. The AIs we don't even notice, but they work and improve our experience. It was a good video. I believe that quality increase करने की कोशिश करते हैं. Let's settings 25%. I can do better than that. Of course, कभी तो मैं भी पूछूंगा ही. If you take Elon Musk's words seriously, Elon Musk in the podcast also said that AI and robotics could replace most human work in next 2 decades. Of course, मैंने बताया 20 years is what timeline he gave to everyone. In the next 20 years, things will change completely. We will be approaching singularity. There will be abundant food, supplies, and everything else. Working will be optional, and maybe things get different. We will be able to live longer. The future is actually very bright if you think about that. And for an average guy also, without jobs, still, you know what I think about universal basic income, which is provided to people who cannot afford. You know what I think about universal basic income? It's like its form exists in India also. Like उनको ही तो पैसे देने हैं ना जो अभी कमा नहीं रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, या फिर सबको भी देंगे तो भी. इंडिया में भी तो गवर्नमेंट स्कीम्स है कितनी सारी. सरकारें, मंत्री सब चीज़ें फ्री में बांट रहे हैं. सब चीज़ें फ्री में बांट रहे हैं, तो वो भी तो एक तरह से यूनिवर्सल इनकम ही तो. बेरोजगार भत्ता भी तो है. If you are unemployed, you get money. If you are poor, you get rice, wheat, and other things with it. There's subsidy on gas cylinder. There's subsidy on many other things. Even कुछ स्टेट्स में तो बिजली के बिल भी काफ़ी कम है. तो आई डू थिंक कि गवर्नमेंट कैन सस्टेन दैट. ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी पे ज़्यादा लोड आएगा. अभी भी तो इंडियन इकोनॉमी में कितना सारा चल रहा है वो सब. तो लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी पे लोड आएगा, बट नहीं, इट वॉन्ट बी दैट हैवी फॉर द इकोनॉमी. इट्स जस्ट दैट now if we would do it, no one would. Now we will do it, no one would be interested in working, and that would be bad for economy due to decreased productivity. Due to decreased productivity. But once productivity increases and we don't need humans, we can sustain things at a better level.
That's what I think. So it can be sustained. 69 67 नंबर क्यों ट्रेंड हुआ था अभी इतना ज़्यादा, मेरे तो वही समझ में नहीं आया. क्या मैं रील स्क्रॉल करूँ? अब काफ़ी स्ट्रीम हो गई है. नो. Of course, the businesses are like his sons. He cannot choose one. Talking about sons, he has many sons, which I think is fine. He has enough money to sustain them, to give them good life. He can afford to, and no one of them will suffer, unlike many other people. It's just his choice. He has money, intelligence to do that. He should do that. अभी विस्पर थंडर कैसे लॉन्च कर रही है जब विस्पर तो स्पीच वाला मॉडल है. अच्छा, रनवे का है. सॉरी, रनवे कंपनी का स्पीड विस्पर थंडर. रनवे 4.5. इसका क्या है लेमरेना पे रेटिंग्स? वो क्या ये वीओ 3 को भी वेट कर रहा है क्या? इतना अच्छा मॉडल है क्या? क्योंकि लग तो गजब रहा है दिखने में. जस्ट लाइक एनिमेशन. क्या पता है इसकी स्पीड की. चलिए तो फिर लीडर गेम्स खेलता मैं, पर खेल नहीं सकता इसमें. माइनक्राफ्ट खोलूँगा तो वो फिर से हैंग हो जाएगा. That's what I was talking about. Elon Musk says there is a very high probability that we are living in a simulation. There's some probability that we are in a simulation, probably pretty high. One way to think of this is to say, if you look at the advancement of games, video games in the past 50 or 60 years, they are changing drastically from few pixelated games to games becoming more and more realistic, for not for just like real world. And according to him, in future the games will be real time generated using AI models. The storylines will be generated real time, and the NPCs, other than the game player, will have their own AI models running, so they know what you are talking about. They can think, unlike games currently which have pre-decided dialogues in them. So they will be intelligent. They know, NPCs will know that whatever they are doing due to AI models. Not only the player will be smart, the NPCs will be smart also and context aware. So gaming is going to change, and we can see that now also कि काफ़ी गेम्स में एक दो में भी आया था ना कि जब bosses are smart, they don't follow pre-decided moves now. They learn and change moves accordingly every time using machine learning. Next thing I want to talk about is Colgate, the legendary company. The same question I want to ask you. ChatGPT launched just 3 years ago. Can you live without it today? For me, no, I cannot. I use many parts of it. Yeah.
from discussing the personal things to finding more things that I want to. How do I say? Like, of course, don't use it for thinking, but I use it to find more ideas to think further, and it supports my thinking. Like, if I have idea for a YouTube channel, YouTube, I think more, then it thinks more and generates further ideas, then I think more and generates improve those ideas better. जूटोपिया भी रिलीज हो गई ना, मैं देखूंगा. आई थिंक इट्स अ गुड मूवी. आई बिलीव ऑनलाइन आएगी ना जब देखेंगे उस पर OTT पे. ऑफ कोर्स दिख तो नहीं रहा, कोई नहीं दिख रहा. He said that the biggest, Elon Musk ने सही बोला था कि the companies that will be Google and Nvidia, obviously they will be the biggest companies in the future. Nothing like this ever happened, guys. You know what this account deserves? I'm not interested. ख्वाजा that's when not my parents. This is AI generated, definitely. He would not release things like that online. H1B के बारे में बात किया, and you can see all company game. You know what, I don't have much practice of talking this much. Mostly मैं कमरे में रहता हूँ, पढ़ता हूँ, स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ. इतना मैं लगातार बात नहीं करता, किसी से भी नहीं करता मैं बात इतना. तो अब मेरा गला बैठ रहा है. बट विद प्रैक्टिस एवरीथिंग कैन बी कॉन्कर्ड. तो करते हैं लाइव स्ट्रीम्स डेली, फिर देखते हैं कुछ और मिलेगा तो नहीं, फिर मैं बंद कर रहा हूँ. कुछ नहीं है. Yes, that's what I was talking about, to solve 0.1%. Why make 99.9% suffer? Other countries also have things like these crimes and everything else. They don't do this. They have much open. They are not so restricting recently. और फिर recently गवर्नमेंट ने ऐप के लिए भी कंपलसरी कर दिया है, जिसको कोई यूज़ भी नहीं करेगा. I think it's just to collect more data, to track more people more accurately. क्या ही कर सकते हैं इंडिया का, बट इंडिया तो इंडिया ही है. Boys season 5 coming next year, guys. इससे याद आया, एरन मोरियार्टी. ये वाला फीचर है उसमें. मैं क्लोड तो यूज़ नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो लिमिट्स उसमें बहुत लो हैं, पेड में अफोर्ड नहीं कर सकता. तो मैं परप्लेक्सिटी के थ्रू ज़रूर यूज़ करता हूँ क्लोड को, उसमें API के थ्रू. बाकी आई कैन नॉट. देखा आपने, अनदर प्रोटोटाइप दैट मेक्स पीपल एक्साइटेड, एंड ये कभी भी ऑफ कोर्स मास मार्केट नहीं आएगा. They just release prototype, show their capabilities, invest money, पर वो उसको लॉन्च नहीं करते, पता नहीं क्यों. करना चाहिए ना, वो कैपेबिलिटीज दिखा के छोड़ देते. ये तो बोल रहे हैं कि विस्पर 3 क्लिंग AI का है, कोई बोल रहा है रनवे का है. इट्स जस्ट अ सीक्रेट कोड, वी डोंट नो किसकी तरफ से है ये.
मानस AI वॉज वेरी गुड कंप्यूटर एजेंट का, बट जब से कोमेट आया है मैं वही यूज़ लेता हूँ. मानस का वही है कि इट्स नॉट फ्री एंड आई कैन नॉट अफोर्ड द पेड वन. इफ़ आई कुड अफोर्ड द पेड वन तो डेफिनेटली मैं मानस AI यूज़ लेता. मानस जो भी है. ओह, दिस शूज आर ऑसम. बढ़िया लग रहे हैं ना. ये कौन से हैं? मैं भी ऐसे पहनता हूँ वाइड बेयर फिट शूज. Again, India's fertility rate is below replenishment rate of 2.1. The world is losing its population. We don't know if we will go extinct or not, but things are definitely not looking good for the population of the world. ये बात करते हैं. नहीं है इसमें सोरा 2 प्रो. इमेज वाला मॉडल नहीं है क्या उसके पास? चैट जीपीटी के पास नहीं है ना. जीपीटी इमेज वाला 1121 पे. चैट जीपीटी के पास इमेज वाला मॉडल नहीं है. डीप सीक ने ऑफ कोर्स रिलीज कर दिया है अपना वर्जन 3.2 थिंकिंग एंड स्पेशिएट बीट्स जीपीटी 5 हाई. इट सही से बात करूँ. डीप सीक को ही डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, फिर मैं जा रही हूँ. डीप सीक लॉन्च कर दिया है. 2 मॉडल्स हैं उनके, डीप थिंकिंग एंड स्पेशियल रीजनिंग फर्स्ट. बोथ आर एंड एजेंट्स के लिए बनाए हुए हैं. परफॉर्मेंस इनकी सिमिलर टू जेमिनाई 3 प्रो. दे बीट इट, मतलब काफ़ी अच्छे हैं. ओपन सोर्स हैज़ अगेन कोट अप. अगर ये डिले नहीं किया होता तो भी कम पावरफुल मॉडल आ जाता, फिर उनको 4 पे भी सही हो जाता, बट सही किया. Google CEO Sundar Pichai signals quantum computing could be next big tech shift after AI. The field is rapidly evolving thanks to AI. AI के आने से चीज़ें बदल रही है. माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी नई चिप्स रिलीज़ की थी, गूगल ने भी. एंड जस्ट वही है कि अब मूव्स लो नहीं भी लगे. मूव्स लो, द प्रोग्रेस विल कंटिन्यू टू इंक्रीज exponentially over the years. According to him, Google's quantum efforts are focused on building machines capable of stimulating natural processes more precisely, which जिससे कि होंगे फिर से नई फील्ड की डिस्कवरी. कहीं वैसे तो ना हो जाए फिजिक्स के बाद फिर सबको लगा कि अब कुछ नहीं बचा, फिर आई क्वांटम फिजिक्स एंड अब क्वांटम कंप्यूटिंग से फिर एक कोई नई फील्ड डिस्कवर हो जाए, कम्प्लीटली न्यू ब्रांच. बट जो भी है नेचर को बहुत ही अच्छे से मिमिक करेगा. अच्छी कैलकुलेशंस होंगी. वी विल बी अगेन मच क्लोजर टू सिंगुलैरिटी थैंक्स टू अगेन क्वांटम कंप्यूटिंग. ड्रग डिस्कवरी, मटेरियल साइंस सब में चेंज होगा. हाथ में क्यों लिया मैंने? ऐसे ही मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं थोड़ा सही से बोलूं, तो फिर मैंने हाथ में ले लिया. इधर ही लगा लूँगा मैं इसको बस से.
इसके नीचे टी शर्ट के लगाने का भी मेरे को जोर आता है, क्या ही लगाऊं उसमें। दाविंसी रिजॉल्व। चलिए गाइस, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है बात करने के लिए। एंड मैं कल से बुक्स भी पढ़ता हूँ ना, तो मैं बुक्स में पॉइंट्स हाईलाइट कर लाऊंगा। एंड कुछ और भी मिल जाएगा अपने को बात करने के लिए। डेली मैं चैप्टर्स पढ़ता हूँ। करंटली मैं सुपर इंटेलिजेंस पढ़ रहा हूँ, द काइनेटिक्स ऑफ एन इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, पोस्ट डेवलपमेंट, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज सब पढ़ी थी मैंने। बट सबकी बातें करेंगे, पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड दैट्स इट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, ड्रॉप इट इन द कमेंट्स, आई विल आंसर इट टुमारो। एंड लाइव स्ट्रीम में तो आपने पूछा नहीं अभी कुछ, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड मुझे बताएं हाउ आई कैन इम्प्रूव थिंग्स फर्दर। बाय बाय। एक छोटा सा मैं टच क्ले करने चाहूँगा इसमें ब्रेक चालू करके कि वो कैसा महसूस होता है, उसके बाद बंद कर देंगे। स्ट्रीम मार्केट भी लगाया है।